Good afternoon, dear students. Today, the lecture that I am going to take, the class that you have is in the paper of Philosophical Foundations of Education, relating to different Western philosophers. We shall be discussing about today, we shall be discussing about naturalism and Rousseau, the philosophy pertaining to Rousseau. आज जिस दर्शन शास्त्री के बारे में हम पढ़ेंगे, लेक्चर सुनेंगे, वो है रूजो, प्रकृतिवाद। जब हम रूजो की बात करें तो प्रकृतिवाद की बात ना करें या प्रकृतिवाद की बात करें तो रूजो की ना करें, यह संभव नहीं है। तो कुछ स्लाइड्स मैंने प्रिपेयर करी थी जिनके आधार पर मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती थी। एंड एज यूजुअल my class shall be both the medium of instruction, that is English as well as Hindi. In case you find it any difficulty, you may post your questions to me and you know how. So coming back to the things regarding philosophical foundations of education, I want to let you know that the various philosophies that we talk about, the various aspects that we talk about, we must know certain aspects, and that is regarding how and why and what of these very pertaining to prescriptions like प्रकृतिवाद क्या कहता है, प्रकृतिवाद के pertaining आप किस चीज को कहते हैं कि it is relating to different aspects, किस प्रकार से रूजो ने उनके बारे में क्या चीजें कही हैं. So we shall be discussing various aspects, various points, various you can say क्या करिकुलम, क्या उनका पाठ्यक्रम रहा है, पाठ्यचर्या किस चीज के पर्टेनिंग बताई गई है. So we shall be discussing different aspects pertaining to that. कई बार ये नेशनलिज्म की बात हम जब प्रकृतिवाद की करते हैं तो इनका कहा हुआ कोटेशन ध्यान में आता है कि the world of reality has its limit, the world of imagination is boundless. प्रकृतिवाद, जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में नेचुरलिज्म के पर्टेनिंग, प्रकृतिवाद के पर्टेनिंग कई सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी. सो आई वुड लाइक यू टू बेस योर थॉट्स एंड प्रोसेसेस ऑन दैट, रिगार्डिंग दैट. सो उसमें उसके पर्टेनिंग अगर हम बात करते हैं, you will find that ये जो चीजें हैं उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं. जैसे नेचर को कहा है, नेचर इज एवरीथिंग, देयर इज नथिंग बियॉन्ड इट. जैसे कि प्रकृतिवाद कहता है कि नेचर या प्रकृति सब कुछ है, प्रकृति के पहले न प्रकृति के बाद कुछ भी इम्पोर्टेंट या वास्तविक नहीं होता. नेचर को कहा गया है कि नेचर इज व्हाट इज टर्म्ड एज मटेरियलिज्म. लेकिन नेचर को, मटेरियलिज्म की हम बात करते हैं तो प्रकृति को इम्पोर्टेंस दी है. कहना चाहिए जो मटेरियलिज्म है या भौतिकतावादी दर्शन की बात है उसको इम्पोर्टेंस कम दी है. And they have said that man should investigate the truth of nature by scientific methods with all his capacities and resourcefulness. It doesn't believe in sentimentalism, और स्पिरिचुअलिज्म और सुपरनैचुरलिज्म. जैसे कि आपने आइडियलिज्म की जब फिलॉसफी पढ़ी थी तो आपने ये ध्यान दिया होगा कि उसमें स्पिरिचुअलिटी को, सुपरनैचुरल को इम्पोर्टेंस दी गई है. लेकिन नेशनलिज्म उसके ठीक विपरीत आर्तक शब्द की बात करता है, जिसमें सुपरनैचुरल को या ज्यादा अधिक महत्ता नहीं देता, आप कह सकते हैं. प्रकृति की जब हम बात करते हैं तो मनुष्य की प्रकृति, मानव की प्रकृति और साथ साथ में वो प्रकृति जो एक संसार में हमें दिखती है, उस प्राकृतिक रूप की बात की गई है. When we talk about naturalism, the definition given by Hawking is naturalism is metaphysics which considers nature as the whole of reality. It excludes what is the supernatural or of the other world. मतलब जिस दुनिया की हम बात कर रहे हैं, प्रकृति कहती है, प्रकृतिवाद कहता है कि वो सब कुछ सुपरनैचुरल, सब कुछ दूसरा और अन्य है, भिन्न है, उस सबसे अलग है और वो कंप्लीट रियलिटी को एक्सक्लूड करता है उस नेचुरलिज्म के पर्टेनिंग. Then there comes the meaning of naturalism.
When we talk about the naturalism की मीनिंग की हम बात करते हैं, तो आप it emphasizes on the nature in every field of education. हम शिक्षा के प्रत्येक एस्पेक्ट को कवर करते हुए बात करेंगे कि किन चीजों पे, किन पहलुओं की उनकी बात करी गई है. फॉर एग्जाम्पल, इट एम्फेसाइजेस ऑन द नेचर इन एवरी फील्ड ऑफ एजुकेशन. प्रत्येक फील्ड की बात करी गई है. It is a philosophy which considers nature as everything and denies the existence, you can say, which denies the existence of any spirit. मतलब कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि जब एम्फसाइज करते हैं, जब फिलॉसफी बात करती है प्रकृति की, तो वो सब कुछ लेती है मगर किसी भी स्पिरिट की बात, स्पिरिचुअलिटी की बात, या नाउ वी विल अगेन बी रिलेटिंग इट बैक टू रूजो, कि रूजो जो हुए हैं उन्होंने सदा इस बात की, प्रकृतिवाद की बात करी है, बच्चे बालक की प्रकृति की बात करी है, डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. ईश्वर की सत्ता को नहीं माना है, प्रकृति की सत्ता को माना है. जो कुछ एग्जिस्ट करता है वो गॉड का बनाया ना करके प्रकृति का बनाया हुआ किया है. और इनफैक्ट दे हैव टॉक्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरलिज्म, और इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है मैटर को एंड टू द फिजिकल वर्ल्ड. मतलब जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ समाज में है, जो कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, दे हैव टॉक्ड अबाउट इट. फॉर एग्जाम्पल, दे हैव सेड दैट ये जो प्रिंसिपल्स इनके हैं, इट इज ऑन द स्ट्रेस ऑफ द फिजिकल एनवायरमेंट. ये प्रकृति जो आपको दिखती है, जो एनवायरमेंट है, जो पेड़ पौधे हैं, जो चारों ओर की खूबसूरती जिसको आप बताते हैं, it is all existing on the basis of physical environment. And universe is a huge machine. Now ये एक ऐसा concept इन्होंने बताया था. Now I have to discuss with you of naturalism before I come to Rousseau. I know you have basic idea about naturalism, but until and unless we discuss about the existence of नेचुरलिज्म और नेचुरलिज्म की कुछ फिलोसफी को जब तक हम डिस्कस नहीं कर लेते, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम रूजो के एस्पेक्ट को हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे. So then they talk about universe is a huge machine. It means man is also a part of this machine. एक उन्होंने कहा, जो दर्शन शास्त्री इसको मानते हैं, उनका कहना है कि यूनिवर्स जो है, जो ये ब्रह्मांड है, ये एक बहुत बड़ी मशीन है, एक ऐसा यंत्र है जिसके अंदर जितने भी व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति अपने आप में एक यंत्र है, और वो छोटा यंत्र है किंतु पूर्ण यंत्र है. एवरी मैन इज अ पार्ट ऑफ दिस ह्यूज मशीन बट इज अ कंप्लीट मशीन इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ. So this is a very unique concept that has been given by philosophy of naturalism, as Rousseau also sees it as. So you can understand कि physical environment पे importance दी है, universe को importance दी है as a huge machine, and man is said to be a part of this machine, and reality can be, they have said that reality can be truly analyzed by natural sciences. ना अगर हम प्राकृतिक विज्ञान की बात करें, क्यों? क्योंकि इन्होंने तीन प्रकार के इन्होंने टाइप्स कहे हैं नेचुरलिज्म के. एक बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म माना है, एक फिजिकल मैकेनिज्म माना है ना. ये जो बायोलॉजिकल की बात कर रहे हैं, ये जो फिजिकल नेचुरलिज्म की बात कर रहे हैं, इसी में मशीन का कंसेप्ट दिया गया है, इसी में डार्विन की थ्योरी करी है, जिसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात की गई है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स, रियलिटी कैन बी ट्रूली एनालाइज्ड बाय नेचुरल साइंसेस. द प्रेजेंट इज द रियल लाइफ and man should try to make this life happy and comfortable. जब हम इस चीज की बात करते हैं, इनका कहना था कि मनुष्य जो है प्रकृति में रहकर जितना वो हासिल कर सकता है, वो वास्तविक जीवन के लिए वो केवल स्पिरिचुअलिटी की बात करने से, केवल एग्जिस्टेंस की बात करने से वो उतना हासिल नहीं कर सकता है. सो मैन शुड ट्राई टू मेक दिस लाइफ हैप्पी एंड कंफर्टेबल. ये इंसान के ऊपर है कि वो अपने जीवन को कैसे खुशहाल बनाता है, कैसे कंफर्टेबल बनाता है, एंड दैट इज व्हाट दे टॉक अबाउट, एंड हाउ टू मेक दिस लाइफ more beautiful and more interesting. Now when we talk about the principles of naturalism,
There's another important aspect when we talk about unchanging laws of nature explains all the events and occurrence of the world. जो कुछ प्रकृति में है वो वापस पुनः प्रकृति में चला जाता है, उसके लिए कहीं से और एफर्ट नहीं करना पड़ता. And education in accordance with nature of the child is exceptionally important. See, इनका कहना था, प्रकृतिवाद का कहना था, वही रूजो का कहना हुआ है कि जो कुछ व्यक्ति सीखता है यहाँ पे, वो शिक्षा ग्रहण करता है, वो बच्चे की प्रकृति के अनुसार प्रकृति में रहकर सीखता है, और इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है. Then they talk about education in accordance with the nature of the child. और जब बच्चे की हम प्रकृति की बात करते हैं, we talk about the nature or the existence of the man. Now, ये जो इन्होंने बात करी है, man is the highest creature or animal according to his nature, so the essence of his life is animal instinct and not spirituality. इनका कहना है कि प्रकृतिवाद को मानने वाले दर्शन शास्त्री कहते हैं कि जो सबसे उच्च श्रेणी है इंसान की, वो इंसान की है, मनुष्य की है, और एनिमल किंगडम में मनुष्य या मानव ही सबसे उच्च श्रेणी का उच्च क्रिएचर माना गया है. So the essence of this life is animal instinct and not spirituality. तो जो मानव की जो इंस्टिंक्ट है, जो उसकी प्रकृति है, वो नेचुरली एनिमल से रिलेटेड है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड नहीं है. इसीलिए ये आइडियलिज्म की फिलॉसफी के विरोध करते हैं. So that is why you find that they talk about that. रूसो ने भी यहाँ पे इसी के पर्टेनिंग डिस्कस किया है. Then we come to the characteristics of naturalism. So I would like to discuss this with you briefly before I shift to Rousseau, as I'm creating a background for it. So back to nature, this it was said by the philosophers belonging to naturalism group of philosophy. They talked about back to nature, they talked about negative education. Now negative education is a terminology which has been basically used and talked about by Rousseau. So it is against bookish knowledge and verbalism. They were anti the thought, like idealism believed in bookish knowledge, in rote learning, in memorization, in verbalism. So they talk about naturalism giving central position to the child in the educational process. ये जो प्रकृति है मानव की, इसमें कहा है कि नेगेटिव एजुकेशन का कंसेप्ट क्या है. They have talked about the concept being कि कुछ भी शिक्षा ना दो, बालक को कुछ भी शिक्षा ना दो, और यही उसकी सबसे बड़ी शिक्षा है कि उसको फीड ना करिए, उसके अंदर नॉलेज के टिडबिट्स मत ठूसिए, उसको अपनी सेंसेस के माध्यम से, let him learn through the senses, let him grasp through those sensory organs जिनके माध्यम से वो शिक्षा ग्रहण करेगा. So naturalism gives central position to the child in the education process and not to the teacher. अगर हम content matter को उन्होंने कहा कि हम ज्यादा importance देंगे, so Rousseau says that giving more importance to the teacher, or giving more importance to the subject content matter, will mean that the child is not that important. But what is important according to naturalism, or according to Rousseau, as you would say, it is the child-centric education, or the center or the pivot is the child. तो बच्चे को बाल केंद्रित शिक्षा की बात करी है, बालक को केंद्र माना है, केंद्र बिंदु माना है, जिसके चारों ओर शिक्षा को रिवॉल्व करने की बात कही है. Then they have talked about education prepares a child for his future adult life, and they have talked about freedom of the child. बालक की आजादी, बालक की स्वतंत्रता सबसे प्रथम है. यदि हम बालक पर अंकुश लगाएंगे, यदि हम उनकी डिसिप्लिन पर हम रोक लगाएंगे, उनको चीजों को सिखाने का प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, तो इनका कहना है कि बच्चा सीख नहीं पाएगा. So naturalism is one philosophy which believes in giving complete freedom. They do not believe in giving freedom which is restricted in any form. They do not believe in giving education which is bound at any place. They believe in giving education which is for the child alone.
So education here emphasizes on the training of senses, as senses are the gateway of knowledge. इन्होंने senses को gateway of knowledge कहा है, sensory organs कहा है, where they have talked about the materialistic education, the scientific education. So this scientific education is the most pivot and the main crux behind it all. Then we talk about the aims of naturalism and the philosophy as believed by Rousseau. Naturalism says attainment of present and future happiness. They do not believe in what was happening prior. पहले क्या होता था, past क्या था, उस पर कोई उनको बेस नहीं करते. They believe in the struggle for existence. That is why they believe in this Darwin's theory. Naturalism की belief प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन मशीन, जो मनुष्य है, जो मानव है, वो अपने आप में संपूर्ण है, एंड दैट इज व्हाई दे टॉक अबाउट इट एज अ ह्यूमन मशीन. एंड दे आल्सो बिलीव इन अडैप्शन, और यू कैन से अडेप्टेशन ऑफ एनवायरनमेंट. प्रकृति सबसे इंपॉर्टेंट है, और बच्चे की प्रकृति को इस प्रकार से संभालना चाहिए कि वो अपने चारों ओर के वातावरण को, एनवायरनमेंट को अडैप्ट कर सके. So that is the improvement of racial gains is possible only when they talk about relating to various aspects. So improvement of racial gains, autonomous development and education according to nature. ये इन्होंने बात करी है according to nature. प्रकृति के हिसाब से शिक्षा दी जानी चाहिए. बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दें. उद्देश्य है शिक्षा का नेचुरलिज्म के हिसाब से कि शिक्षा पूर्णतः बच्चे के हिसाब से, बच्चे के अनुसार, बच्चे की नीड्स, एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी के अनुसार उसको पूर्ण शिक्षा देना सबसे प्रथम इम्पोर्टेंट है. सो बिलीव इन गिविंग of education and education according to nature. That is what they have talked about. Then we come to naturalism and curriculum. जिस curriculum की बात करी है प्रकृतिवाद में, और रूजो ने जिसको फॉलो किया है, वो है naturalists do not advocate a fixed curriculum. आप समझ सकते हैं कि जब हम प्रकृतिवाद की बात करते हैं, प्रकृति में रहकर प्रकृति से सीखने की बात करते हैं, तो ये संभव नहीं है कि उनके लिए फिक्स शेड्यूल बनाया जाए, टाइम टेबल हो. बच्चे प्रकृति में रहकर सीखेंगे तो अपने आप से स्वाभाविक रूप से सीखेंगे. सो द लर्निंग विल बी इन नेचुरल फॉर्म, and the curriculum must be child centered, as they say. It gives place for skills and other useful educational activities. They continuously talk about activities which are going to be more child centric, which will be more for skills and other useful educational activities, and they consider literacy subjects as useless and believe in giving no place to curriculum. इनके अनुसार curriculum जो है वो उसकी कोई भी उपयोगिता नहीं है कि अगर हम फिक्स्ड करिकुलम बना दें, अगर हम इस प्रकार से करिकुलम बनाएं कि जहां पे लर्निंग बच्चों को हो रही है, लेकिन वो एक बंधे हुए करिकुलम के तहत, एक बंधी हुई रूपरेखा के तहत, एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल, एक फिक्स्ड सिलेबस के तहत. सो उसको उसकी कोई भी गुंजाइश नेचुरलिज्म की फिलॉसफी में नहीं है. So Rousseau does not believe in giving any kind of such curriculum beliefs. So curriculum should contain games, sports, physical culture, biology, physics, nature study, language, culture, and they talk about history, geography, and other allied subjects. They lay stress on physical education and health training and home science also, because physical education, health and training, and home science are subjects which are relating to the natural form of education. So now we come to the different aspects of curriculum according to Herbert Spencer, who has classified all human activities into 5 and assigned places to each of them in the curriculum. The 5 activities in the order of priority are activities of self-preservation, activities of a vocation, activities of a worthy citizenship. See, these are all which are included in the curriculum which naturalism follows, and these have been given by Herbert Spencer, which are quite similar to that of Rousseau. Activities of a worthy home membership, activities of the leisure time, and these 5 activities constitute this complete
living in. So then we come to the you can say curriculum, naturalism, that is relating to the method of teaching कि किस प्रकार की टेक्निक की बात करते हैं. So naturalism is a result against the old traditional bookish system of education. किसी भी प्रकार से किताबी कीड़ा बनने के लिए मना किया है. प्रकृतिवाद में कहा गया है कि फिलॉसफी में द ट्रेडिशनल सिस्टम से दूर हटें, लर्निंग टीचिंग को प्रोसेस को बेहतर करें. दे हैव टॉक्ड अबाउट डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस which also talks about you can say with nature, things, men. See, this is another aspect which naturalism talks about. प्रकृतिवाद में डायरेक्ट एक्सपीरियंस की बात करी गई है. एक सही प्रकार से you can say relating to different aspects of you can say learning process, learning teaching process, which are relating to the direct experience and nature. Things, men is the keynote of instruction according to naturalists. They follow the different you can say methods of teaching. यहाँ पे जो भिन्न प्रकार के methods बताए हैं वो अलग अलग बताए हैं, जैसे interest, capacity and aptitude of the child, learning by doing, direct method, heuristic method. ये क्या है? जो करके सीखने की बात करी जाए, learning by doing, करके सीखना. डायरेक्ट मेथड की बात करी गई है, ह्यूरिस्टिक मेथड की बात करी गई है. अगेन these methods are all relating to the direct appliances. Then we come to naturalism and method of teaching, different other methods also which has been taken into account like observation and excursion. ये बच्चों को समाज में जोड़ती हैं कई सारी चीजों से, जैसे कि ऑब्जर्व करने से, देखने से सीखते हैं. तो ये प्राकृतिक तरीके से है क्योंकि बालक हमेशा देखता है, देखने से बहुत सारी चीजें लर्न करता है. तो naturally what happens while observing certain aspects, the child is able to learn much more. So an excursion again means giving direct experience to the child and in the form of playway method and learning through senses. Sensory organs को बहुत importance दी गई है. Then they have talked about self-government, self-effort and co-education. ये सभी methods कहीं ना कहीं बच्चों की क्रिएटिविटी को, बच्चों के इमेजिनेशन को, बच्चों के टेम्परामेंट को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, उनको आगे ले जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. So learning through participation is an important aspect which they talk about. Learning through participation here means कि किस प्रकार से वो different चीजों को सीखते हैं. Naturalists adopt Dalton method, kindergarten, excursion method, Montessori method, experimentation and textbook method so as to bring about a natural development in the child. ये सारे methods हैं जिनके अपनाने की बात रूसो ने भी की है. So we have to understand that how we can bring about these changes and these aspects in the teaching learning process which they talk about the methodology. Then we come to the role of teacher. आप सभी teachers हैं. आपके अनुसार प्रकृतिवाद किस चीजों की बात करता है? So they should behave in a sympathetic and affectionate method, affectionate way for the children. Teacher का role भले ही उनको डिसिप्लिन करना नहीं है, लेकिन उनके प्रति, बच्चों के प्रति उनके अंदर अफेक्शन होना चाहिए, सिंपैथी होनी चाहिए और नेचर को सबसे ज्यादा अहमियत देनी चाहिए, इंपॉर्टेंस देनी चाहिए. So they talk about the supreme method, supreme technology of bringing forth. तो नेचर या प्रकृति बच्चे की सबसे अहम, सबसे इम्पोर्टेंट टीचर मानी गई है. तो टीचर इज द ऑब्जर्वर. टीचर इज द you can say is observer because वो ऑब्जर्व कर रही है, बच्चा टीचर में सीख रहा है, प्रकृति से सीख रहा है और इस दौरान उसका रोल एक ऑब्जर्वर का है, ना कि उसको एम्फसाइज करके फोर्सibly कुछ और कराने का. So they talk about understanding about the child. Rousseau says the teacher is a stage setter. Teacher, he says, Rousseau says, is like a gardener. और गार्डनर का रोल होता है कि किस प्रकार से वो बच्चों को ज्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सके, ना कि उसको खुद ही आगे बढ़ने का प्रयास करे. No learning should be forced learning according to Rousseau.
They should all come in a natural form. So while we talk about naturalism and discipline, we realize naturalists give full freedom to the child to perform and learn whatever he likes. No punishment, full freedom and free society. नेशनलिज्म का कहना है कि जो पूरी फ्रीडम है जो बच्चों को दी जा सके, जो परफॉर्म कर रहे हैं और बच्चे उसको लाइक करते हैं, वो उनको देने की जरूरत है, कि उनको पनिश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पनिश करने का काम प्रकृति करती है। जैसे अगर मानिए बच्चा कुछ खेल रहा है, कहीं से गिर जा रहा है, तो रोकिए मत। आज वो गिरेगा, कल दोबारा वो नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि वो गिरने के बाद वो सीख जाएगा कि यहाँ से हम अगर करेंगे, इस तरीके से खेलेंगे तो यहाँ पे हम गिर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे चढ़ेंगे तो हम पेड़ पे चढ़ रहा है, चढ़ने दीजिए। कहीं किसी ऊंची जगह पे गया, किसी पेड़ से के ऊपर कांटे हैं, let the child learn. No need to punish. It is nature which is going to punish. So the reward and the punishment is the duty of the nature. Do not come in between nature and the child. So full freedom should be given, free society should be managed, and that is how the learning will be conducted. Then when they talk about the learning way, naturalists assume that the child has no knowledge of good and bad, but he suffers pain when he makes a mistake and pleasure when he does something right. Thus he gets reward or punishment for his actions. बच्चा जो कुछ भी करता है, अच्छा है बुरा है, वो उसका पेन सफर करता है, and when he makes a mistake and pleasure, then he does something right. So it is during this process that the child learns, and this. So what happens is that the child learns during this process, and then the child learns how this is possible, how we can go through this process, and we include the way of learning. This kind of learning things make the child learn in a different manner, and we automatically learn that this is a process जिसमें कि डिसिप्लिन को सीखना बच्चे का कार्य होता है, और बच्चा इसी के प्रोसेस में सीखता है। और हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम बच्चे को कैसे लर्निंग कराते हैं और हम किस प्रकार से उसको सिखाते हैं। नो डाउट देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स जिस पे बच्चा सीखने की जगह पे कई चीजों पे गिरेगा, चोट लगेगी, हो सकता है उसको थोड़ा सफर करना पड़े, लेकिन ये जो लर्निंग होगी ये कहीं ज्यादा इम्पैक्टफुल होगी, कहीं ज्यादा बच्चे के लिए, you can say it will be more fruitful to the child. And it is our duty as a teacher, as an elder, to see that this learning is enhanced, is brought forward in front of the child. तो पनिशमेंट हमें नहीं देना है, बल्कि ये पनिशमेंट प्रकृति दे देगी, और हम केवल उसके मूक दर्शक हैं, हम केवल गाइड हैं जो हम बच्चे को सिखाने का प्रयास करते हैं. Then we come to the school environment, where we find that this learning regarding the school should be completely free, flexible, and without any rigidity. It should be helpful for the freedom and the natural development of the child. It should be situated in the lap of nature, far away from the cities. There should not be any fixed timetable and ready doses of knowledge to be provided. जैसे कि कहते हैं कि बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारी चीजें बच्चों को सिखानी है, तो बच्चों के ऊपर आप प्रेशर डालते जाते हैं, तो that is wrong, that is incorrect method. We must see to it that this learning should not be provided in fixed doses. कोई मेडिसिन नहीं है, कोई दवाई नहीं है कि बच्चों को आप फिक्स तरीके से नॉलेज दे रहे हैं. क्या वो सीखने के लिए तत्पर हैं, क्या वो सीखना चाहते हैं, वो उसको प्रोवाइड किया जाए. There should be no provision for punishment. This is simply a methodology जहाँ पे आप learning करते हैं. So school develops the feeling of self-learning and self-discipline. It does not want to burden the child with examinations. केवल एग्जाम के लिए पढ़ाई, केवल डिग्री के लिए पढ़ाई, केवल डिग्री के लिए ज्ञान ना होके सेल्फ लर्निंग के लिए वो सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन किस प्रकार का हो. Should it be you can say क्या वो बलपूर्वक किया जाना चाहिए, क्या वो अपने आप से आना चाहिए, स्वानुशासन हो, दमनात्मक हो, मुक्त्यात्मक हो या प्रभावात्मक हो.
So whether it is emancipatory, whether it is a discipline which is autocratic in nature, it is democratic in nature. So that kind, that is what they talk about. So we come to the protagonists of naturalism. We find that is Jean Rousseau, is the champion of naturalism. Or Aristotle, Comte, Bacon, Darwin, Huxley, Spencer, Epicurus, Rabindranath Tagore, all have been naturalists, all are believers in the philosophy of naturalism. But इन सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाले जे रूजो हुए हैं, जो आपके सिलेबस के एक बहुत ही अहम फिलोसोफर रहे हैं और जिनके बारे में अब हम डिटेल में अभी करेंगे नेशनलिज्म के तहत. Now when I talk to you about Jean-Jacques Rousseau, सबसे इम्पोर्टेंट बात उनके अर्ली चाइल्डहुड को लेकर है कि कहाँ उनका जन्म हुआ, वो कहाँ पैदा हुए, किस प्रकार से उनके बारे में क्या कहा गया है. So Jean-Jacques Rousseau, as you all know, right now we talked about, is a philosopher who is, you can say, naturalist philosopher, प्रकृतिवाद को मानने वाले थे. He was born in Geneva, in Switzerland, on June 28, 1712. 1712 में 28 जून को इनका जन्म जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में हुआ. इनकी फैमिली जो थी वो बहुत ही पायस, बहुत ही बिलीवर ऑफ कैल्विनिस्ट थी, रेफ्यूजीज फ्रॉम फ्रांस से जो कि थे. इनकी मदर की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी आफ्टर चाइल्ड बर्थ, और इनके फादर बहुत ही गरीब थे, एक वॉच मेकर थे, एक डांस मास्टर थे. And when he was 10, his father fled from Geneva and he was then raised by his mother's sister. ये इनकी बहुत ही brief early childhood history है, जो कि आने वाले events जिनके बारे में हम बात करेंगे उसको ये trace करते हैं. क्योंकि इनका जन्म इस प्रकार का था कि इन्होंने बहुत गरीबी देखी. इन्होंने अपनी माँ को नहीं पाया क्योंकि इनके पैदा होते ही माँ की डेथ हो गई. फिर इनको इनकी मौसी ने पाला. So there were different reasons, different places how he suffered and why he did what he talks about. जब हम इनकी स्कूलिंग की बात करते हैं तो you will find that he stopped traditional schooling at the age of 12. जिस उम्र में सबसे अधिक स्कूल की जरूरत होती है तो उस उम्र में 12 वर्ष की आयु में इनकी स्कूलिंग बंद हो गई. He was apprenticed to several trades but had no success. इन्होंने बहुत तरह के प्रयास किए ताकि अपना जीवन यापन कर सके. You will be surprised to know the amount of time he tried to run away from different aspects. इन्होंने बहुत तरह की jobs लेने की कोशिश करी. इन्होंने बहुत तरह के efforts किए to become successful. इन्होंने उस समय की दुनियावी बहुत सारी चीजें try out करी, and you will be surprised they did not fall in place when you listen to about his philosophy of education. Then we come to the fact that in 1728 he ran away from Geneva and joined the Catholic Church. He took a job as a footman to a noblewoman in Annecy. ये 1728 में जेनेवा से भाग गए जहाँ पे रहते थे और इन्होंने कैथोलिक चर्च ज्वाइन कर लिया. उसके बाद में इन्होंने एक नौकरी करी जो एक फुटमैन की थी, एक नोबल वुमन के, उस समय की जो रॉयल्टी की वुमन थी उनके लिए. उसके बाद में he became a lover to a wealthy widow who provided for his education in the classic and music. इनको बहुत क्लासिक्स में, म्यूजिक में इंटरेस्ट था, and he shifted his you can say affection to a wealthy widow who gave him education, provided him for education. In 1738 he journeyed to Montpellier to improve his health, and when he returned, his liver had found a replacement. Now, ये 1738 की बात है जब ये he was actually a very sick child. ये बहुत ही बीमार रहते थे, अक्सर इनकी हेल्थ इश्यूज रहते थे, तो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ये चले गए. So he started different aspects कि वो किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करें. So you find that there were many aspects जिसमें उन्होंने लर्निंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करी, उन्होंने अपने आप सिखाने की कोशिश करी और इन्होंने अपने आप को शिक्षा बढ़ाने की कोशिश करी.
because he was not successful in his life at that time. He was going through a bad phase in life. वो अपने जीवन में चाहते थे कि किस प्रकार से अपने जीवन को ज्यादा सक्सेसफुल बनाएं. तो उन्होंने जो व्यक्ति जो उनकी लेडी हेल्प कर रही थी, she also withdrew. So at that time he attempted teaching but he did not like it. और ये इनके लिए बहुत important aspect कहा जाता है कि he was continuously going through different aspects of learning. और इसके अनुसार he was not recognized for this system of musical notation, and he was an unsatisfactory secretary to the French ambassador in Venice. And finally, when he moved back to Paris after his failed attempts, we find that this education system of his had a different angle to it. ये जो चीजों की हम बात कर रहे हैं, ये इन्होंने किस प्रकार से लर्निंग करी या इन्होंने किस प्रकार से सीखा, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था, क्योंकि इनको बहुत सारी चीजों के थ्रू गुजरना पड़ा, बहुत सारी परेशानियां आई. His childhood was very sad. He was not able to move ahead in life, and then his family life was like very bad again. In Paris in 1745, he took a mistress, and they had 5 children. And then Jean-Jacques Rousseau took them all to foundling and to be raised as orphans. This is again a very sad story. When he had so many children, then he talks about education of different kind, which is at times questioned by many. कि ऐसा क्यों करा गया कि he again married later Theresia in 1768. लेकिन चूंकि उनके 5 बच्चे थे and he was not married to Theresia, so he took those 5 children and put them in orphanage. और ये बहुत ही दर्दनाक चीजें बताई गई हैं इनकी, जो तकलीफ दे हैं. But later in life you find that he was back in Paris, and then he published several more less offensive works. And as an opera he worked there, and he saw Rousseau also suffered from psychological feelings of persecution, and he lived in a cottage at Valley, and for the last few months of his life, and due to his mental and physical health problems, he died of a stroke on July 2nd, 1778. Now, this was his brief history of life, and we shall be further doing these classes on different aspects of what his life story was, what his curriculum, he has talked about curriculum, the system of education, the different phases and stages of education that he talks about, the books that he has written, the role of teachers that he talks about, the nature and how nature can come to rescue of a human being. But you will find certain things contradictory to what his lifestyle was, what his philosophy of life was, philosophy of education. So we find that his mental, his physical health were certain reasons that he talks about. And it was in the year 1762 when you find that he published different books, and the famous book was Social Contract and Emily. These 2 books are referred to again and again, and in 1762 he published this most famous book on the social contract and Emily. And we'll be discussing soon in our coming lectures what he talks in the social contract and Emily. And due to the content of these books about religion and his opinion that there should be a democratic city-state that he talks about, in France he was exiled by the government, and he did not like it, so in 1770 he had returned to Paris, but in 1778 he died. So this is the lives that we talk about and the things that he discussed in various aspects. Now, when we talk to you about the exile and the different aspects of education system, he was a philosopher. See, he went through a lot many aspects of education with a lot many experiences he had in life, and it was these experiences which made him the person that he was, as it always does in cases of each and every one of us. So Rousseau was a thorough naturalist, and
He believed in different aspects of naturalism. इसीलिए प्रकृतिवाद की जब हम बात करेंगे तो बिना रूजो की बात करें हमारा प्रकृतिवाद पूरा नहीं होता है. So let us hope that you have followed these various aspects when I talk to you about him. And for the coming different aspects, I would simply like to say that Rousseau has been a very important, famous philosopher. He might not have followed these very things in his life, but his philosophy is very much practical. And when we talk about it in today's time, we realize the importance of it. किस प्रकार से बच्चे को कितनी आज़ादी देनी चाहिए, किस तरह से सिखाना चाहिए, कोई कैपिटल पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, कैसे सेंसरी ऑर्गन्स को यूज करना चाहिए, किस तरीके से नॉलेज को जबरदस्ती बच्चे में नहीं डालना है, बल्कि कैसे उसको एक यूज करना है कि बच्चा स्वयं अपने आप से स्व अनुशासित होकर लर्न करे. All those different aspects are extremely important and we need to understand the importance that it holds in the life of each and every child. So hoping that you are the future teachers of system of our country, you will keep into mind the various aspects, learn what is being of use to you, and adapt certain aspects of Rousseau's philosophy of naturalism. With that, I would like to end my class today and hope for a better future. Next class will be based on Rousseau only. We shall continue with our class in the next session. So with that, thank you all. Thank you so much.